Okay, so we take out your book. We will learn in chapter number 14, that is the earth and the sky, right? Chapter 14, earth and the sky. So man has already finished the explanation of the sky, the sun and the moon, right? So today we will learn about stars. Okay, today we will learn about stars. Today we will learn about stars. As you can see in the board, this is stars, right? ये क्या है? Stars है, okay? Now you can see in page number 114. You can see in page number 114. We can see many stars twinkling in the night sky, right? यहाँ पे क्या दिया है? Stars है. ये कब? ये night अंधेरा है. आप वो स्काई में क्या है? स्टार्स है. ओके, सो दीज आर द स्टार्स इन द स्काई एट नाइट. ओके, so they are actually very big, but they appear tiny as they are far away from us. Okay, stars क्या दिखते हैं हमको? एकदम छोटा छोटा दिखता है, right? Whenever you see in the sky at night, right? जब आप रात को जब स्काई में देखते हो तो क्या होगा? आपको स्टार्स दिखाई देता है, राइट? व्हेन देयर इज अ क्लियर स्काई, जब कोई क्लाउड्स नहीं होगा तो तब क्या दिखाई देगा? आपको स्टार्स दिखाई देता है, राइट? कैसे दिखाई देता है? बड़ा दिखाई देता है? नो, छोटा छोटा दिखाई देता है, राइट? बिकॉज इट इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस. ओके, वी कैन नॉट काउंट द स्टार्स एज देयर आर टू मेनी ऑफ देम. दे मेक द नाइट स्काई लुक ब्यूटीफुल. तो स्टार्स क्या है? We cannot count stars. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है stars. Can you see stars over here? These are what? These are all stars. Okay. These are all stars. These are all stars. जो भी ये दिख रहा है आपको स्पार्क कर रहा है, तो ये सब क्या है? स्टार्स है. ठीक है, स्टार्स क्या करते हैं? स्काई को अच्छा दिखने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, राइट? व्हेनेवर यू सी एट द स्काई एट नाइट, राइट? जब आप देखते हो रात को अंधेरे में, जब क्लियर स्काई होगा, आसमान एकदम साफ होगा, जब आप देखेंगे तो क्या होगा? एक अच्छा दिखाई देता है, राइट? स्टार्स दिखाई देता है आसमान में, है ना? So the sun is also a star. आपने जो सन के बारे में पढ़ा था ये प्रीवियस क्लास, राइट? अपने लास्ट क्लास में मैम ने क्या पढ़ाया था आपको? सन के बारे में पढ़ाया था, राइट? सन इज also a star. सन भी क्या है? स्टार है. ठीक है, it appears bigger as it is nearer to us than any other stars. सन आपको स्टार्स से क्या है? बड़ा दिखते हैं, राइट? ये जो आसमान में आपको छोटा छोटा स्टार्स दिखते हैं, इससे थोड़ा बड़ा दिखता है. क्यों? क्योंकि सन it is nearer to us. Okay, it is nearer to us than any other sky. Okay, so first simple, let us write simple definition of star. Okay, star basically star का definition क्या है? simple form में हमें लिखते हैं. So what
is star. ठीक है, a star is a massive glowing ball of extremely hot gas. ये थोड़ा आपका broader explanation है. ठीक है, in a simple way what you can say is star क्या है? Star are big ball of hot gases. Okay, क्या है? Star are big ball of hot gases. Stars are big ball of hot gases. ठीक है, कौन सा गैस होता है इसके अंदर? इसके अंदर होते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम. ओके, मोस्टली क्या होता है? हाइड्रोजन एंड हीलियम. Stars are big ball of hot gases. Mostly इसका गैस कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन एंड हीलियम. ओके, एंड इट हैज इट्स ओन लाइट एंड हीट. एंड जो स्टार्स है इसका क्या है? इसका खुद का अपना एक हीट होता है, अपना खुद का एक लाइट होता है. Whereas आपने पढ़ा था मून के बारे में, राइट? मून does not has its own light. मून का क्या है? खुद का लाइट नहीं होता है. Whereas star has its own light and heat. Okay, hydrogen and has its own light and heat, right? Like I said, sun is also a star. Okay, sun is also a star, right? There are lots of stars in the universe. हमारे universe में ऐसे बहुत सारे stars हैं. Okay? But the sun is the closest one to Earth and bigger star. But sun क्या है? sun ही एक ऐसा star है जो Earth के सबसे near है, सबसे close है. ठीक है, and क्या है? बड़ा है. That's why हम जब sun को देखते हैं, when we see sun, क्या दिखता है? Compared to stars at night, sun क्या दिखता है? बड़ा दिखता है, right? Why? Because compared to the other stars, sun is bigger and nearest to Earth. Okay, क्या है? Sun is also a star. Okay, sun is a star. Sun क्या है? Star. जब हम sun को देखते हैं क्या दिखते हैं? बड़ा दिखता है, right? Compared to other stars, right? There are lots of stars in the universe. हमारे universe में ऐसे बहुत सारे stars हैं. And जो stars हम night में देखते हैं, वो stars क्या है? Innumerable. That is, we cannot count stars, right? हम stars को count कर सकते हैं क्या? Night में नहीं, right? कभी कभार क्या होता है? एक दो, अगर the sky is not very clear, right? अगर आसमान इतना साफ नहीं है, तो क्या होगा? एक, दो, तीन ऐसे stars दिखाई देता है, right? Why? Because the sky is not clear. अगर आपने देखा एक clear sky में, the sky is very very clear, तब क्या दिखाई देता है? तब आप जब आसमान में देखते हो तो क्या दिखाता है? There are lots and lots of stars in the sky, right? Which we cannot count, है ना? हम उसको count नहीं कर सकते. ठीक है? And they are very tiny. छोटा छोटा दिखता है एकदम, right? बहुत छोटा छोटा दिखता है. क्यों छोटा छोटा दिखता है? Because the stars are very 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 far away from us. जो stars हम आसमान में दिखती है वो क्या है? हमसे बहुत दूर है. ठीक है, इसलिए उसको वो क्या दिखता है? छोटा दिखता है. Whereas जब whenever you see sun थोड़ा बड़ा दिखता है. Why? Because sun is bigger and closest to Earth. It's nearer to Earth. ठीक है, इसी वजह से आप क्या दिखते हैं? Compared to the stars at night, जो नाइट में स्पार्कल करते हैं, राइट? ट्विंकल करता है, राइट? ये स्टार्स से क्या है? सन बड़ा दिखते हैं. ओके, स्टार्स. So what are stars? Stars are the big ball of hot gases. Okay, and stars are small shiny lights that we see in the night sky. और the simple form क्या है?
Stars are bright. Stars are small, shiny lights that we see in the night sky. That we see in the night sky. Okay. There are different types of stars. Stars different type का होता है. जिसमें से एक क्या है sun. Sun is also a star. Okay. आप वो when you go to the higher classes, there you will then learn about the stars. Different types of stars. Okay. जब आप higher class में जाओगे तब आप stars के types करोगे. ठीक है. For now you just have to know what the stars is. What star is. ठीक है. आपको definition पता है. It's enough. Okay. They look very tiny, but stars are actually very big. Stars क्या है? दिखने में छोटा है, हम यहाँ से दिखते तो छोटा है, but they are actually very very big. Okay? They look tiny, but they are very very big. They look tiny, but actually are very big. जब हम यहाँ से देखते हैं स्टार्स को तो एकदम छोटा छोटा दिखता है, राइट? बहुत छोटा छोटा दिखता है, राइट? बट एक्चुअल में क्या है, उसका साइज बहुत बड़ा होता है. ठीक है. वो हमसे बहुत बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए वो इतना छोटा दिखाई देता है. ठीक है. वरना स्टार क्या है, इज वेरी बिग इन साइज. दे शाइन बिकॉज दे आर वेरी हॉट. और वो शाइन, वो ट्विंकल क्यों करते हैं? बिकॉज stars are very hot. Like sun is very hot, right? Sun क्या है, बहुत hot होते हैं. वैसे star is also very hot. That's why they twinkle. That's why they sparkle, right? जब भी आप नाइट में स्काई को देखते हैं तो चमकता है, right? Stars क्या करता है? चमकता है. वो क्यों चमकता है? Because that star is very very hot. ठीक है? And as we learned earlier, that star has its own heat, right? And light. है ना. इसलिए वो खुद चमकता है क्योंकि वो बहुत क्या होता है, हॉट होता है. लाइक हम जब सन को देखते हैं, सन इज वेरी ब्राइट, राइट? ब्राइट होता है, क्या होता है, हॉट होता है. वैसे ही ये जो हम नाइट में स्काई में स्टार्स देखते हैं वो भी क्या होता है, वो भी हॉट होते हैं. ठीक है. दैट्स व्हाई दैट स्टार्स स्पार्कल और ट्विंकल इन द नाइट. ओके. सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्टार. यू कैन आल्सो नोट इट डाउन इन योर कॉपी इफ यू वांट. Stars are, but star क्या है, big ball of hot gases. It's mostly hydrogen and helium and has its own light and heat. ठीक है. इसका खुद का एक लाइट होता है, खुद का एक हीट होता है. Whereas मून जो हम दिखाई देता है नाइट में, मून का अपना खुद का लाइट नहीं होता है. ओके. Stars are simple. Stars are small shiny lights that we see in the night sky. Stars क्या है, small, छोटा. shiny lights means जो चमकता है, राइट? जो चमकता है वो है जो हम नाइट में देखते हैं आसमान पे, उसको बोलते हैं स्टार्स. एंड दे लुक टाइनी बट एक्चुअली आर वेरी बिग. हम आपको लगता होगा ना कि आप जब आसमान में देखते हैं तो लगता होगा कि कितना छोटा छोटा है स्टार्स, राइट? क्या है, कितना छोटा छोटा स्टार्स है. बट यू आर रॉन्ग. स्टार उतना छोटा नहीं होता है. दे आर एक्चुअली वेरी वेरी बिग, राइट? बट सिंस दे आर फार अवे फ्रॉम अस दे लुक टाइनी. ठीक है. जब हम यहाँ से देखते हैं तो छोटा दिखता है. क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर होते, इससे छोटा दिखता है. वरना स्टार्स क्या है, बहुत बड़ा होता है. ओके. नाउ व्हेन कैन वी सी स्टार्स? हम स्टार्स को कब देख सकते हैं? ओके. व्हेन कैन वी सी स्टार्स? व्हेन कैन वी सी स्टार्स? When can we see stars? When can we see stars? हम stars को कब देख सकते हैं? Okay? We see stars at night. कब देखेंगे? We see stars at night. Right? We see stars at
सन इज ऑल्सो अ स्टार, राइट, बट वो हमको किसमें, दिन में दिखाई देता है, राइट, दिन में दिखाई देता है। बट जो नाइट बेसिकली जो भी स्टार्स होता है, जो छोटा छोटा स्टार्स होता है, वो बेसिकली हमको कब दिखाई देता है, जब अंधेरा होता है, राइट। सो वी सी स्टार्स एट नाइट। नाउ नेक्स्ट, वी कैन नॉट सी स्टार्स इन द डे टाइम, ओके, एक्सेप्ट सन we cannot see all the stars in the daytime, right? We cannot see stars, we cannot see stars at daytime. Can you see stars at daytime? Can you see stars at daytime? No, right? Except sun, no other stars is visible at sky, right? So we cannot see stars at daytime. जब भी आप बाहर निकल के देखते हो डे टाइम में, तो whenever you look at the sky, क्या दिखता है आपको, स्टार्स दिखाई देता है? No, right? Because we can see stars only at night. Okay? Now next, the sun is also a star, but it shines in the day, right? Sun is also क्या है? Star है। जैसे मैंने बोला आपको, sun is also stars, but we see sun at daytime. It shines at daytime. Okay? The sun is also star, but it shines in the day. Okay? So when can we see stars? यहाँ पे मैंने दिया आपको 3 ऑप्शंस। We see stars at night, जब अंधेरा होता है तब दिखाई देता है। We cannot see stars at daytime, हम स्टार्स को दिन में नहीं देख सकते, ओके। एंड दिन में हम सिर्फ कौन सा स्टार को देख सकते हैं? ओनली सन, ओके, एक्सेप्ट सन, हम दूसरा कोई भी स्टार हमको दिखाई नहीं देता है, ओके। The sun is also a star, but it shines in day. Sun एक स्टार है, उसका भी खुद का एक हीट होता है, खुद का एक लाइट होता है, बट वो सिर्फ दिन में दिखाई देता है, ठीक है। Now next is, how do stars look? Stars कैसे दिखाई देता है? How do stars look? Okay. Next is, how do stars look? How do stars look? Stars twinkle in the sky, right? Stars क्या करता है? Twinkle. Stars twinkle in the sky. आप लोगों ने देखा है ना stars कैसे होते हैं? Stars twinkle in the sky, right? This one, this rhymes also, right? तो क्या है? Twinkles, a star twinkles in the sky. Some stars look bright. Some stars क्या होता है? Looks bright. कोई stars क्या होता है? बहुत ज़्यादा bright दिखाई देता है, right? कोई stars इतना bright नहीं होता है. Some stars looks bright. जब आप आसमान में देखोगे तो क्या होगा? कोई स्टार्स क्या होगा? ज्यादा चमक रहा होता है, कोई क्या होता है उसका ब्राइटनेस कम होता है, राइट? So some stars looks bright. Next, some stars look small. Some stars look small. Some stars look small. Some stars look small. कोई स्टार्स क्या होता है? छोटा, एकदम छोटा दिखाई देता है, कोई उससे थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, राइट? किसी का लाइट डिम होता है तो किसी का लाइट
ब्राइट होता है, राइट? ये सब कब दिखाई देता है? एट नाइट, राइट? जब भी आप स्काई में देखते हो तब आपको दिखाई देता है। And stars make the sky look beautiful, right? Stars make the sky look beautiful. Stars make the sky look beautiful. लेकिन ये जब आसमान में आप इतना सारा स्टार्स देखते हो तो क्या दिखाई अच्छा दिखाई देता है, राइट? वेरी वेरी ब्यूटीफुल एट नाइट, है ना? या फिर जब आप देखते हो स्काई में, अगर स्काई क्लियर नहीं है, बहुत सारा क्लाउड्स है, तो अच्छा दिखता है? नो, राइट? बट व्हेन द स्काई इज वेरी वेरी क्लियर, व्हेन यू सी, क्या दिखता है आपको? बहुत सारे स्टार्स दिखता है, राइट? सो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट नाइट, ओके? Stars can be seen with the naked eyes at night, right? Stars हमको क्या दिखाई देता है? हम देखते हैं आँख से दिखाई देता है, right? Since they are very very small, but क्या है हमको दिखाई देता है because they are very very far away from us, right? उसका साइज क्यों छोटा है? क्यों एकदम छोटा दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि sky is मतलब star is very far away from us, whereas sun is bigger and nearest to the earth, right? सन ही सिर्फ एक ऐसा स्टार है जो क्या है? जो अर्थ के सबसे नियर है और सबसे क्लोज है, ठीक है? एंड हमने पढ़ा जैसे स्टार्स मेक देयर ओन लाइट एंड हीट, राइट? स्टार्स क्या करता है? खुद का एक लाइट एंड खुद का एक हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है? एंड अ न्यू स्टार इज फॉर्म्ड एवरी 18 डेज, ओके? जब भी नया स्टार्स फॉर्म होता है तो वो 18 दिन के बाद फॉर्म होता है, ठीक है? अ न्यू स्टार इज फॉर्म्ड after every 18 days, or a new star is formed after every 18 days. And some stars live for million of years, ठीक है? And some stars क्या है? Live for millions of years. एक नया स्टार कब बनता है? एक after every 18 days नया स्टार फॉर्म होते हैं, and क्या होता है? And some stars live for millions of years, okay? So this was all about stars. I hope you all have understood well about the stars, right? Now in next class we will learn about clouds, okay? So this is all for today, and get ready for your next class, that is your math. Thank you everyone. Good afternoon students. Now let's begin with the math class. Get ready with your exercise 40. So as in our last class we were studying subtraction, right? So today also we will do the same topic with more examples on it. So today also we are going to study about subtraction. Yesterday we had just started off with subtraction. Today we will go into a vast manner. So the sign of subtraction is this. The sign is denoted by this. Alright. So yesterday we studied subtraction with borrow method. We studied subtraction with borrow method, and I made you understand what borrow is. So today let us understand the concept of numerator and denominator also, because
numerator. So what is numerator? Let us understand what numerator is first. So when a number is placed up or above, so that is what numerator is. And denominator, what is denominator? So first, numerator, when a number is placed up or above. So whenever a number is placed up or above, it is called numerator. And whenever when a number is placed down or say below, it is found as numerator and denominator. So today we are understanding about a new topic, that is numerator and denominator. So numerator क्या है? जो नंबर ऊपर की तरफ, जैसे कि for example if I have 33, 21, alright, so the number on top, that is 33, this is numerator क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, and the number 21 is denominator because it is down or below. Alright, so numerator is a number. When a number is placed up or above, it is found as numerator, and whenever a number is placed down or below, it is found as denominator. Alright, so now let us do it with some examples. Yesterday also we were doing the subtraction with borrow. Today we will do it with some more examples. Alright, so for today's question we have 90 and 38 subtraction. So let us solve this all together. How will we solve this? हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, पहले हम जो ones के कॉलम में है, the number which is placed in ones column we will subtract it first. Alright, यहाँ पर tens और ones में दो कॉलम में numbers placed है. So first we will only deal with the numbers placed on ones column. Alright, so let us see 0 and 8. 0 minus 8. So on yesterday's class, as I told you, when the numerator is, so over here numerator is 0 and denominator is 8. So whenever the numerator is less than the denominator, the simple subtraction is not possible. Alright, जब numerator denominator से छोटा है, तो subtraction possible नहीं होता है. Alright, so as we can see over here also, here is the number 0 and 8. 0 is placed on upper side, so it is numerator. As I told you, here also we can numerator and denominator. Placed number placed up or above is numerator, and down or below is denominator. Likewise, when we come here, first we have to deal with the number placed on the ones place. Alright, so as you all can see, there are two numbers 0 and 8. So जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, जब ऊपर का नंबर नीचे के नंबर से छोटा होता है तो इसमें subtraction possible नहीं है. तो what will we do? We will borrow number from tens place. ये 10 के place हमको ये ones place पे number borrow करना है. Alright, so how will we do that?
it is not possible. So from tens place, we will borrow 1. Alright? So now the 0 becomes 10. It has become 10. क्योंकि टेंस के बेस में से 1 को और 1 नंबर borrow किया तो इसमें हुआ 10. So जब 9 है इसको 1 दी, ones को ones के कॉलम में 1 दिया तो इसमें कितना होगा? Only 8. Because 9 has already given 1 digit on ones column. So now this subtraction is possible. 0 में 8 माइनस नहीं हो रहा था, इसलिए हमने 10 के बेस से 1 नंबर borrow किया. तो हमको मिला है 10. 1 and 0 is 10. So now we will do the subtraction. Now the subtraction is possible. अब 10 में 8 माइनस करोगे तो कितना होगा? Write the answer in the comment section. Those who are attentive on the class, please tell me 10 minus 8 is what will be the answer over here? I am waiting for your answers. Only 10 minus 8. First we are dealing with this column, right? So 10 minus 8 is how much? Give your name also so that I can know who you are. Type your name also. The answer you have written is correct, but I can't understand who you are. So type your name and answers. Very good, JS. 10 minus 8 is 2. It is 2. So we will write 2 over here. Alright? So now moving to the next column. 8 minus 3. Why 8? Because 9 has already given 1 to the ones place. Now we will subtract 8 and 3. So now again you tell me 8 minus 3 is. So what will be the answer over here? Only Angel and Jess are attentive to the class from the very beginning. I don't know what is happening to the rest of you. So tell me the answer. 8 minus 3 is? You tell me the answer. How much will be over here? Eight minus 3 will be 5. Alright. So now we got the total. So the answer of this is 52. We got the answer by subtracting. So by subtracting 90 minus 38, we got 52. Alright? So now we will do another question. So now you all will tell me the answer in the comment section, okay? So pay attention and once. So next question you all will solve it, okay? I will just copy the question and I will write whatever the answer you all suggest me to. So the next question for us is 60 and 49. So again 0 and 9. The numerator is smaller than the denominator, so the simple subtraction is not possible. We have to borrow here also. Alright? So what will we do is we will borrow number from tens place. So the 6 has given 1 and the digit over here has become 10. And 6 has given 1, so it has become 5. So now you all tell me 10 minus 9 is, leave in comment section, answer. Give the answer over here. Okay.
Very good, Shrishti. 10 minus 9 is 1. Alright? And 5 minus 4 is also 1. So we got our answer, that is 11. So 60 minus 49 is 11. So this is how we do subtraction in borrow method. Subtraction with borrow method. Very good, Angel and Srishti, all your answers are correct. So let us do some more exercise. So now this also you will answer, okay? Copy the question and solve it. Tens and ones. Now the question is 62 minus 33. Okay, now solve this and give me the answer. Solve this in exercise copy and tell me the answer in the comment section. Try to solve this. So first we will deal with ones place. So यहाँ पर जैसे कि आप सब देख सकते हो, the numerator that is 2 is smaller than the denominator. So the simple subtraction is not possible. What will we have to do? We have to borrow. Do your sum in an exercise copy. मैं बोर्ड पे sum करूँगी, आप सब exercise copy में करके give me the answers. So what we will do is we will borrow from tens place. So now we have 12 and 3. 6 has given 1, so it is left with 5. Alright? So don't forget to cut the number and write the digit it is left with. Otherwise it will be very confusing to subtract. So 12 minus 3 is, what is the answer? Very good, 9. And 5 minus 3 is 2. Alright? So the answer is 29. So 62 minus 33 is 29. Let me check who has given me the correct answer. Srishti and only Srishti has given me the correct answer. Mention your name with the answers, okay? Very good. So now you all are paying attention to the class. Okay, so we will do one more question. We now will do you all do this combination exercise copy and give me the comment. So tell me the answer to this. Solve this in exercise copy. So now I hope the borrow subtraction is being clear to all of you. Most of you are commenting the answers in correct way also. So let us revise for what we have done today, okay? We are coming to the end of the class. So let us revise what we did today. So the topic for today's class was subtraction. And the method we did subtraction was with borrow method. Borrow means to ask. Alright? So next what we did, we first understood the concept of numerator and denominator. As I told you, numerators are the numbers that is placed up or above. जो ऊपर की तरफ number होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? Numerator. And
नंबर दैट इज डाउनवर्ड बिलो, नीचे की तरफ जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर. So here we try to solve the numbers by borrow method. So what we did, first tens and ones, what we had done, first we subtracted the number of tens place. So as here the numerator was lesser than the denominator, we borrowed from tens place and we tried to solve this. Second also we did the same, and we subtracted 60 and 49, we got 11. Oh, this we have solved twice today. No problem. And here also 62 minus 33 we got 29. Alright, so this is how subtraction is done with borrow method. So you already requested to copy all this in the exercise copy. And we doing the revision of whatever topic we are discussing in online classes. Alright, so let us end the class of math today. We will do next topic in our other classes. So this is all for today. This is the end of our math class. So now get ready with your Hindi class. Alright. गुड आफ्टरनून बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी सब्जेक्ट में. चलिए शुरू करते हैं. चलिए आज हम पढ़ेंगे एक और अनेक. ठीक है, आज का हमारा विषय होगा एक और अनेक. ठीक है, ठीक है. तो अनेक किसे कहते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन में लिखिए प्रश्न. अनेक किसे कहते हैं? ठीक है, प्रश्न है. ठीक है, इसके प्रश्न का हिंट देंगे. जब कोई वस्तु एक से अधिक होता है तब वह अनेक कहलाता है. जैसे, ठीक है,
देखिए, एक और अनेक प्रश्न अनेक किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक से अधिक होता है तो वह अनेक कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक केला होगा, ठीक है, एक सेब ही लीजिए, यहाँ पे कितना सेब है? एक सेब है, इसको हम क्या बोलेंगे? सेब। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? एक सेब है और यहाँ पे क्या है? एक से अधिक सेब है। ठीक है, यहाँ पे जब एक से अधिक सेब है तो ये क्या हो जाएगा? एक, और यहाँ पे हो गया अनेक। ठीक है, क्या हो गया? यहाँ पे एक सेब और यहाँ पे अनेक सेब, मतलब एक से अधिक है तो यहाँ पे सेब ही हो गया। ठीक है ना? तो चलिए अब इसे हम क्लास टीचर को डिवाइड कर दिया। तो देखिए वहां पे अभी यहाँ पे देखिए, अभी हम आपको क्या बताए हैं
एक और अनेक, ठीक है। तो यहाँ पे मेज, ये क्या है, मेज है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक है या अनेक है। तो यहाँ पे मेरे ऊपर लिखे हुए हैं एक और अनेक। जो एक होगा वो हम इस बॉक्स में लिखेंगे और जो अनेक होगा ये हम इधर बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो माला, तो मेज का अनेक, अनेक क्या हो जाएगा, मेजे। मेज का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। माला, लड़का, तो माला का क्या हो जाएगा, मालाएं। क्योंकि यहाँ पे माला का मतलब हुआ एक ही माला है, ठीक है। और मालाएं का मतलब हो जाएगा बहुत सारे मालाएं, ठीक है। लड़का, यहाँ का मतलब हुआ कि एक ही लड़का है, मतलब एक है। यहाँ पे एक ही लिखेगा, यहाँ पे क्या अनेक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़के, मतलब एक से अनेक, एक से अनेक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौवा, तो यहाँ हो जाएंगे कौवे। कौवा का मतलब होगा एक कौवा, ठीक है। और कौवे का मतलब होगा कि बहुत सारे कौवे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बच्चा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बच्चे। बच्चा का मतलब एक बच्चा है तो हम लोग बोलते हैं बच्चा। बहुत सारे जब बच्चे आ जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बाहर बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। अगर आप क्लास में आते हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक बच्चा आया हुआ है। अगर जब एक से ज्यादा बच्चे आए तो हम लोग नहीं, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। बस, बस से माता, यहाँ पे कर देगा माताएं। अब देखिए तोता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें तोते। यहाँ अधिक क्या हो जाएगा, चूहे। ठीक है। तो एक का अनेक मतलब अगर कोई ऐसा पूछते और पूछेगा कि अनेक किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु एक से अधिक होता है तब हम क्या बोलते हैं, अनेक बोलते, ठीक है। एक केला होगा तो एक केला बोलेंगे, और जहाँ पे एक से अधिक केला होगा तो क्या बोलेंगे, केला है, ठीक है ना। केले, 3 केले, 4 केले। अब 3 केला तो नहीं बोल सकते ना, 3 केले, 4 केले ऐसे बोलेंगे, ठीक है।
देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक पेड़ दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। इस पेड़ में हमें क्या है, बहुत सारे एक वचन भी लिखा हुआ और मतलब एक लिखा हुआ होगा और अनेक भी लिखा हुआ। जैसे यहाँ पे तोता है, तो तोता को हम किस बॉक्स में लिखेंगे, एक वाला बॉक्स में या अनेक वाला बॉक्स में लिखेंगे। तो तोता क्या है, एक है, क्योंकि जब भी हम कुछ तोता को देखते हैं तो कहते हैं तोता है, क्योंकि वहाँ पे एक है, तो वहाँ पे हम एक के पास तोता को क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ अनेक के पास हम तोते को लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे तोते का मतलब क्या होता है, बहुत सारे तोते हैं। अब लड़के हम अनेक में लिखेंगे या एक में लिखेंगे, तो लड़के को हम अनेक में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है। और लड़का को हम एक वाला जो यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि लड़का का भी मतलब क्या होता है कि एक ही लड़का है, लड़के का भी मतलब होता है कि वहाँ बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहन है, तो बहन को हम एक वाले बॉक्स में लिखेंगे या अनेक वाले बॉक्स में लिखेंगे, तो लड़के बहन को हम एक वाले बॉक्स में लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए बहने हैं, तो बहने को हम अनेक वाले बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तारा है, तारा, ठीक है, और तारे, तो तारा को हम किसमें, एक वाले बॉक्स में लिखेंगे और तारे को अनेक वाले बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि तारा एक को हम तारा बोलेंगे और तारे का मतलब वहाँ पे बहुत सारे तारे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कटोरी, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, कटोरी है, तो कटोरी को क्या करेंगे, कटोरी को लिखेंगे, एक में लिखेंगे, और कटोरिया, कटोरिया का मतलब क्या होता है, कटोरी जिसमें हम लोग दूध लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कटोरी। तो कटोरी में हम जब एक जो कटोरी रहता है तो उसको हम कटोरी बोलेंगे, और वहाँ पे बहुत सारे जब कटोरी रहेगा तो उसको क्या मतलब कटोरिया, तो कटोरिया को लिखेंगे अनेक में और कटोरी को लिखेंगे एक में, ठीक है। तो ये देखिए आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए अब कोई आपसे पूछेगा कि अनेक किसे कहते हैं, तो अनेक जब कोई वस्तु एक से अधिक होता है तब हम उसे अनेक कहते हैं, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन जैसे कि आपको बताते हैं, एक केला रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे वहाँ पे, केला, और जहाँ पे 2, 3, 4 केला रहेगा तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 केले, 4 केले, ठीक है। अब एक पुस्तक होगा, अब जैसे कि ये देखिए यहाँ पे एक पुस्तक है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक पुस्तक, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 पुस्तक रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, पुस्तक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि मेज, तो मेज है, माला, मालाएं, लड़का, लड़के, कौवा, कौवे, ठीक है। तो आप अगले सब्जेक्ट के लिए तैयार हो जाए। धन्यवाद। Good afternoon, everyone. Now get ready for your computer class. Okay, take out your computer book and copy. Okay, yesterday we were doing some exercises from the chapter the keyboard and the mouse, right? We have done true and false, fill in the blanks, one word answer, right? So today we will do match the following and some question and answer. Okay, you have to answer me. Okay, आप लोग क्या करना है, आंसर देना है कमेंट बॉक्स में. Okay, you cannot just sit and watch. Okay, you have to be interactive. If I am asking some questions, then you all have to answer it. Okay, you can just answer it in the comment box. Okay, who all are there?
Angel, Jess. Now first we will do match the following. Okay. We will do match the following. You can also note it down in your copy. Okay. Match the following. First we have keyboard. Mouse. Space bar. Enter key. Mouse pointer. Are you all able to see? Right? आप सबको दिखाई दे रहा है ना अच्छे से क्लियर से? Great. First option is point and click. Okay. Second option is give space. Third is type letters. Arrow on screen. Let us wait for some time since electricity has gone. Okay. Okay, so can you give me answer? I'll ask you some questions, okay, till then. We will just do orally, okay? I will ask you questions orally and then you have to answer it in the comment box, okay? So give me a simple definition of keyboard. What is a keyboard? According to you, what is a keyboard? ठीक है? आपके हिसाब से keyboard क्या है? Since we have learned about keyboard, right? We have learned about the uses, keyboard and types of keys and keyboard, right? So according to you, what keyboard is? You can answer it in the comment box. Okay? तब तक आप लोग क्या करें? Answer लिखिए comment box में कि आपके हिसाब से keyboard क्या है? I guess everyone has different answer, right? सबका answer एक तो नहीं हो सकता है, right? So those who are watching, you can just comment down in the comment box. Okay, what is keyboard? आपके हिसाब से keyboard क्या है? We will wait for a while. Okay.
and we are extremely sorry for this technical issue. Yes, Jess, Angel. What is the answer? What do you think? What is keyboard? Huh? Keyboard क्या है? Give me the answer. Yes, Vikash Kumar. What is your name? किसके आईडी से आए हो? Your name? What is your name? Type letters or numbers? Srishti. Okay, Srishti. Okay. Yes, type letters and numbers. A keyboard is used to type letters, right? Good, Srishti. Let's wait for a while. Next, other. Jess, Angel, where is the answer? So we were doing match the following, right? So, first was keyboard. Okay, second was mouse. First, I will write down the question and then you have to answer it. Okay. Space bar. Enter key. And the last one we have is mouse pointer. Okay, so give space. Okay. Go to next line. Okay. Type. Are you all able to see the code, right? Type letters. Okay. Fourth one is point and click. You have to note it down in your computer copy as well, okay? And wait. Arrow on screen. And what else? Point and click. So what will be the answer for keyboard? Here are some options given. Okay. So keyboard का correct answer क्या है? What is the correct answer? Keyboard. What? Give space or go to next line. Type letters, arrow, screen or point and click. क्या है? What is the answer for keyboard? What is the answer for keyboard? Keyboard का आंसर क्या है? Yes, keyboard type letters, right? Good choice. Keyboard का
letters. Next is mouse. What is the correct answer for mouse? Yes, Jess. I know you are Jess. Yes, history, type letters. Okay. Next is mouse. What will be the answer for mouse? Give space or go to next line or arrow on screen or point and click. क्या है mouse का आंसर? What will be the answer for mouse? Jess, Angel, Srishti. क्या है? Go to next line or arrow on screen or point and click. ये ऑप्शन चार ऑप्शन में से आंसर कौन सा है? Amongst these four options, what will be the answer for mouse? Yes, what will be answer? Point and click. Good. Point and click is the correct answer. Now third one is space bar. Space bar is used to. Why do we use space bar? कीबोर्ड पे जो स्पेस बार का की है उसको हम किस लिए यूज करते हैं? What will be the answer for space bar? What will be the answer? स्पेस बार का आंसर क्या होगा? Give space or go to next line or arrow on screen. अभी तीन ऑप्शन है, right? Amongst these three, what will be the correct answer for space bar? Why do we use space bar? Yes, good Srishti. Why do we use space bar? We use space bar to give space, right? So space bar is used to give space. Space bar is used to give space, right? Now the third is enter key. क्या है? Enter key. What will be the answer for enter key? Enter key का आंसर क्या है? Jess, Angel, Srishti. What will be the answer? Enter key का आंसर क्या है? Yes, the correct answer is go to next line. क्या है? Go to next line. Good, Jess. Good, Srishti. Last में क्या है? Mouse, right? क्या है? Mouse. So mouse का क्या होगा आंसर? Sorry, mouse pointer. Mouse pointer का क्या है आंसर? Arrow on screen, right? क्या है? Arrow on screen is the right answer for mouse pointer. Okay? So what? Now let's move on to question and answer. Okay? Okay, so what is keyboard? What is keyboard? A keyboard is used to type letters and numbers, right? Or keyboard is used to type letters and numbers, right? Number 2, what is mouse? Question क्या है? What is mouse? What is mouse? According to you, what is mouse? आपके हिसाब से mouse क्या है? What is mouse?
Okay, Jess, Srishti. What is mouse? Or what is the use of mouse? A mouse is used to point, click, and move objects, right? This is a simple definition of mouse. Okay? A mouse is used to point, click, and move objects. Okay? Name any two keys of the keyboard. Name any two keys of the keyboard. Name any two keys of the keyboard. Keyboard में we have learned that there are many keys in keyboard, right? उनमें से दो कीबोर्ड्स का नाम क्या क्या है? कीज का नाम सॉरी दो कीज का नाम क्या क्या है बोलो? नेम टू कीज ऑफ द कीबोर्ड. क्या क्या होगा? We have learned different types of keys on keyboard, right? So उनमें से आप दो कीज का नाम बताइए कि वो जो हमें कीबोर्ड पे मिलते हैं. क्या क्या है? Enter what? Yes. Enter key and space bar, right? There are other keys as well. Enter keys and space bar. What do we use the mouse for? Mouse किस लिए यूज करते हैं? What do we use mouse for? माउस हम किस लिए यूज करते हैं? इससे पहले का क्वेश्चन में भी था आंसर. What do we use mouse for? We use mouse to क्या करने के लिए? Point and click, right? Point and click. We use mouse to point and click. Okay? हम माउस का किस लिए यूज करते हैं? We use mouse to point and click. Okay, so with this we have come to the end of our chapter as well, the keyboard and the mouse. Okay, we have completed all the exercises related to the chapter, that is true or false, ask the following questions, match the following. Okay, now in next class we will move to another chapter. Okay, now get ready for your next class, everyone, and this you have to note it down in your copy. Okay, thank you everyone. Good afternoon, everyone. So, this is your English class. All of you ready?
chapter 10. Okay, that is question number D. I think this is your homework, so I hope you all are doing homework in your copy, in your book. Okay, today we are moving the next topic, next chapter. Okay, question number 1. Market, Ria, 8. Jump, Jasmine, sleep. Question number 3. Walk, Ju, and swim. Number 4. Table, chair. Question number 5. Read, throw, and carpet. Okay. Okay, so let's start. Okay, yesterday I gave you the homework from this page number 52. That is from grammar portion. Okay, grammar portion, and topic is the underline the doing words and circle the naming words. Right? Underline the doing words. Okay, doing words means word. ना काम करने वाला शब्द, यानी कि जो काम दिखाने वाला, जो काम कर रहे हैं, काम कौन कर रहे हैं? Noun. Right? Noun. Person, animal, things, है ना, वो चीज, वो things, वो तीनों चीज क्या कर रहे हैं? जो भी काम कर रहे हैं, वो काम दिखाने वाला शब्द को क्या बोलेंगे हम? Doing words. And you have to underline. Okay, underline the doing words को underline करना है यहाँ पे दिया हुआ, and circle the naming words. जितनी भी नाम वाले शब्द है, नाम वाला, okay, that is noun. Okay, उसको हम क्या करने वाले हैं? Circle. Okay, उसको क्या करने वाले हैं? Circle. Okay. Look at question number 1. Market. Market यानी कि एक बाजार. क्या एक नाउन है कि ये काम दिखाने वाला है? ये काम दिखा रहे हैं इसमें? काम नहीं दिखा रहे. ओके, मार्केट एक नाम है, तो जो नाम वाले शब्द को हम क्या करेंगे? We have to do circle. Okay, next Riya. Riya is a name. Okay, Riya एक नाम है. Okay, Riya क्या है? नाम है. Circle the naming words. यानी कि अब now we have to circle. Okay, eat means खाना. खाना means हम खाना खाते हैं ना, खाना जब खाते हैं तो काम होता है हमारा, वर्ड होता है. ओके, ऑक्टल हो रहा है, दैट इज इट. ये हुआ हमारे डूइंग वर्ड्स. ओके, डूइंग वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट जंप. जंप यानी कि दौड़ना, एकदम जंप करना. यस, जब आप जंप करते हो, ये क्या हुआ? आपका काम हुआ कि एक नाम है, ये काम है. ओके, जंप करना भी काम है. ओके, so we were doing the underline. Okay, and next is Jasmine. Jasmine is the नाम है ना, नेम वर्ड से, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? नेम वर्ड्स को हम जंप को सर्कल एंड जैस्मिन को अंडरलाइन. स्लीप. स्लीप मींस सोना. स्लीप यानी कि काम दिखा रहे हैं, वर्ड दिखा रहे
वर्ब दिखा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डूइंग वर्ड्स को क्या करेंगे, अंडरलाइन। ओके, Okay, look, let's move to the next one. Walk. Walk means चलना। चलना क्या है, काम कर रहे हैं ना, डूइंग वर्ड्स हो रहे हैं ना वहाँ पे, सो इफ डूइंग वर्ड्स हो रहे हैं तो अंडरलाइन। ओके, जू एक नाम है। ओके, यदि वो नाम है तो सर्कल। ओके, एंड स्विम मींस तैरना। ओके, पानी में तैरना, ये काम नहीं है, यदि काम है तो अंडरलाइन। ओके, टेबल नंबर 4, टेबल एक नाम है, काम है, एक नाम है, राइट। यदि वो नाम है तो we have to circle. Okay, chair भी क्या है, नाम है, नेम है। Okay, नेम है, यदि नेम है तो circle. Okay, बुक क्या है, बुक भी एक नाम है, या बुक में कोई काम नहीं दिखा रहे, बुक भी क्या है, नेम है तो circle. read means पढ़ना एक काम है कि नहीं है, वर्ड है तो अंडरलाइन। थ्रो मींस फेंकना। ओके, कोई चीज हम फेंकते हैं, फेंकना भी क्या होता है, वर्ड होता है। ओके, सो अंडरलाइन। कारपेट जो हम घर के नीचे बिछाते हैं ना, फ्लोर में बिछाते हैं, क्या वो काम है, काम नहीं, वो एक नाम है, कारपेट। यदि नाम है तो we have to circle. Understand? Complete हुआ सबको? Yes, complete हुआ? Yes, मुझे दिखाई दे रहा है आप जैसे। ओके, today we are moving to next chapter, that is chapter 11. Okay, chapter 11, name of the topic is N R plus ing words. Okay, everyone listen carefully. सब लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे। Okay, is M R plus ing words. Okay, first of all, okay, जो हमारे सबसे फर्स्ट में जानने वाली बात क्या है, is M R। ओके, अब इन तीनों की बात कर रहे हैं। नंबर 1, is M R जो है हमारे, is M R हमारे, उसका जो नाम है उसको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। अंडरस्टैंड? उसको क्या बोला जाता है, हेल्पिंग वर्ब। ओके, इसको बोले राइट, आप लोग को समझने के लिए मैं ऐसे करूँगा। ओके, याद करने वाला बात क्या है, नंबर 2, ये इसमें यूज होता है, यूज प्रेजेंट टाइम। ओके, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस बोला जाता है। अब टेंस को आप लोग टाइम भी समझ सकते हो। ओके, प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट टाइम। ओके, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। इज एम आर का दूसरा नाम है, दूसरा नेम है हेल्पिंग वर्ब। ये सबको याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। इज एम आर को क्या बोला जाता है, हेल्पिंग वर्ब। ओके, सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट कहां पे यूज करते हैं, कौन से समय में, प्रेजेंट समय में। ओके, प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। ओके, प्रेजेंट टेंस में
बताया था। ओके, उसमें बताया था कि इस एक आपका कहाँ पे यूज होता है। ओके, ये बताया था। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले याद करने वाली बात है कि इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब एंड इट इज यूज्ड एट प्रेजेंट टेंस। ओके, सो ये हुआ। सो अब यहाँ पे यहाँ पे इज के अब इस की बात कर रहे हैं। अब तीनों में से इस की बात कर रहे हैं। ओके, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर। ओके, जब कोई when there is only one naming words, okay, only one naming words, जब सिर्फ नाउन जो है नेम वर्ड मतलब जो नाउन है सिर्फ अकेला रहता है तब आप इसका यूज करते हैं। ओके, when we talk about ourselves, ओके, जब हम अपने आप के लिए बात करते हैं at that time हम क्या करेंगे, and का यूज करेंगे। ओके, talk about ourselves, ओके, talk about more than one, okay, more than one naming word. Okay, everyone listen carefully. अब मैंने क्या लिखा, देखिए मैंने क्या लिखा is जो है, जब is कहाँ पे यूज किया जाता है, कब। अब देखिए is ने बात तो सबसे फर्स्ट में हमने पढ़ लिया था कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। ओके, सो हमें एक एक करके जानना भी तो है, is का, am का, are का, राइट। ओके, जो is जो है जब भी एक की बात करते, एक नाउन की, एक नेमिंग वर्ड की बात किया जाती है, सिर्फ वन, अकेला। ओके, जब वहां पे नाउन है, जैसे कि राम, अकेला नाम है, अकेला है, देखिए अकेला नाउन है, यदि वो अकेला प्रनाउन है, नाउन और प्रनाउन। ओके, अकेला नाउन है, अकेला प्रनाउन है, सब्जेक्ट हमारा अकेला है, जो बोलने वाला विषय जो है सब्जेक्ट है, अकेला है। ओके, अब इसको सब्जेक्ट भी बोला जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, जब भी कोई नाम जो नेमिंग वर्ड है, जितने नाम वाला शब्द है जो अकेला हो, राम, ही, जैसे कि ट्री। ओके, सो एट दैट टाइम जब अकेला है तो हम किसका यूज करेंगे, कौन सा वर्ब का, is का, कौन सा वर्ब का, is का। और ये बात याद रखना है कि जब भी कोई सेंटेंस, ओके, अब ये क्वेश्चन वाली बात क्या है कि जो is जो है आगे क्यों नहीं आ सकते, राइट। is एक यहाँ पे नाउन प्रनाउन आने के बाद ही is क्यों आता है, ओके, बिकॉज़ क्वेश्चन वाली बात ये है। एंड देखिए जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, ओके, इसमें बता देती हूँ, जब भी आपको कोई सेंटेंस बनाना हो, ओके, यानी कि वाक्य बनाना हो, तो आपको एक चीज की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के साथ विषय, ओके, सब्जेक्ट के साथ विषय के साथ वर्ब का, ओके, विषय के साथ वर्ब का जरूरत पड़ता है। एंड ये बचा हुआ सेंटेंस, रेस्ट ऑफ सेंटेंस ये लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट। ओके, सो नाउ अब देखिए सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है कौन होगा, सब्जेक्ट कौन है, क्या है सब्जेक्ट, विषय। हमारे जो सब्जेक्ट है विषय में या तो फिर नाउन आता है, नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है। ओके, प्रोनाउन सबने पढ़ा है, प्रोनाउन सबने
नाम है, जैसे कि चॉक, बोर्ड, फैन, दिस ऑल थिंग, ओके, चाहे वो थिंग्स का नाम हो, चाहे वो इंसान का नाम हो, चाहे जितने भी एनिमल्स का नाम हो, नाउन, ओके, उस नाउन, ओके, वो नाउन या फिर प्रोनाउन। जैसे कि नाउन के प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के जगह में यूज होने वाला, उसको हटा के, नाउन को हटा के यूज होने वाला जितने भी सेंटेंस है, जितने भी वर्ड्स है, उसको बोलेंगे प्रोनाउन। जैसे कि लड़की है तो शी, लड़का है तो ही, कोई भी थिंग्स है तो इट, कोई भी एनिमल्स है तो इट, ओके। यदि एक से ज्यादा है तो दे, यस, यदि एक से ज्यादा है तो दे, यदि एक से ज्यादा है इसमें मे भी शामिल है तो वी, ओके। तो ये होगा हमारे प्रोनाउन, ओके। या फिर सब्जेक्ट में से नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, ओके। इन दोनों में लेकिन एक होगा, ओके, इन दोनों नहीं होता है, या फिर नाउन होगा, यहाँ पे और लिख देती हूँ, और का मतलब होता है या, ओके, या फिर प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट होता है, उसके साथ वर्ब होता है, वर्ब, ओके, उसके साथ क्या होता है, वर्ब। वर्ब पढ़ा है ना हमने, डूइंग वर्ब्स, जितने भी खेलने वाला, जैसे कि डूइंग वर्ब्स है, जितने भी हम काम करते हैं ना, डूइंग वर्ड्स, ओके, हमने अभी पढ़ा, इससे आगे पढ़ा है डूइंग वर्ड्स के बारे में। वर्ब, जैसे कि डूइंग वर्ड्स हमने अभी पढ़ा ना, जैसे कि हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ा है, इससे आगे का चैप्टर में पढ़ा है, जैसे कि I wash, right? May I wash my hand, right? I wash my hands. मैंने अपने हाथ वॉश किया, I, देखिए, wash यानी कि धुआ, ठीक है? जैसे कि Rahul walks, ठीक है? Rahul चला, Rahul walks to school, right? ये हमने अभी पढ़ा है ना, ये walks वाला, ठीक है? तो ये जो राहुल है, ये जो हमारे नाउन है या फिर प्रोनाउन, आई जो है प्रोनाउन, ठीक है, ये होता है। और उसके पीछे जो वो क्या किया, आई वॉश किया, ठीक है, आई ने धुआ हाथ, ओके, एंड वॉक जो है, जस्ट अ मिनट, ओके, वॉक जो है, जैसे कि राहुल का काम है चलना, ओके, मेरा काम है वॉश करना, धोना। ये जो वॉक है, इसको बोला जाता है वॉक, ओके, इसको बोला जाता है वॉक, काम वाले सब, यानी कि डूइंग वर्ड्स, ओके, डूइंग वर्ड्स है, ये वॉक जो है डूइंग वर्ड्स है। और उसके साथ ये बचा हुआ जो है ना, मैंने हाथ धोआ, मैं स्कूल गया, ये वाला है ऑब्जेक्ट, ओके, ये वाला क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिसको मैं फिर से यहाँ करा दे रही हूँ। तो इनमें से जैसे कि देखिए, नाउन राहुल, इसके मैंने नाउन लिया, ओके, राहुल वर्ब ले ले, राहुल वर्ब्स, ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसे बनते हैं सेंटेंस, ओके, ऐसे बनते हैं सेंटेंस, जैसे कि यहाँ पे नाउन या फिर प्रोनाउन, ओके, ये नाउन लाया है, नाउन, वॉक जो है, वॉक्स चलना, राहुल का काम है चलना, टू स्कूल जो है हमारे ऑब्जेक्ट है, ओके। इन दिस वे हमारे क्या बनते हैं, सेंटेंस क्रिएट होते हैं, सेंटेंस बनते हैं, अंडरस्टैंड, ये बात समझ में आया? सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इज जो है, यहाँ पे क्या बताया कि अब देखिए, इज जो है, इज जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, राइट, मैंने अभी बताया कि इज जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब पे, देखिए, वर्ब पे, ठीक है, मैंने क्या बोला, वर्ब पे, तो इसका प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, सेकंड में, राइट। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा
या फिर वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ओके, ये होगा राहुल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। यदि वो राहुल अकेला है, सिंगल है, तो क्या होगा, ये सिंगल होना चाहिए। अकेला है तभी आएगा इज। ओके, तभी आएगा इज। इज हमारे हेल्पिंग वर्ब है, तो राहुल के बाद इसलिए हेल्पिंग वर्ब आया, राहुल इज प्लेइंग ना, राहुल इज वॉकिंग, राहुल इज प्लेइंग। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे ये क्या हुआ, हमारे हेल्पिंग वर्ब इसके पीछे क्या करते हैं, आते हैं। अंडरस्टैंड? यदि वो हमारे जो सब सिंगुलर है तभी ये इज यहाँ पे अकेला क्या होता है, इज आता है। ओके, इफ यहाँ पे प्लूरल है, एक से ज्यादा नाउन है, तब क्या आएगा, यदि यहाँ पे एक से ज्यादा है, जैसे कि राहुल, राहुल एंड प्रिया, यदि वहां पे राहुल एंड प्रिया दो इंसान है, तब क्या आएगा, तब आएगा आ, तब क्या आएगा आ। ओके, मोर देन वन नेम वर्ड, एक से ज्यादा, तब यहाँ पे एक से ज्यादा है, राहुल एंड यहाँ पे दो इंसान है, एक व्यक्ति तो दो इंसान है, यदि वहां पे दो इंसान है तो आएगा आ। अकेला सब्जेक्ट है, अकेला है तो इज। अंडरस्टैंड? और एम कहाँ आता है, आवर सेल्फ में, यानी कि मेरे में। ओके, जब आपको मेरे बारे में बोलना है, जैसे आपके बारे में बोलना है आई, जब आई आएगा, आई के साथ क्या आता है, एफ। ओके, आई एम 6 years old, आई एम गोइंग, आई एम दैट्स। ओके, ये सेंटेंस बनते हैं। तो इज, एम, आर का इस तरह से हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ओके, ये जो हेल्पिंग वर्ब का जो यूज है, हम क्या सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? ये बात समझ में आई सबको? ये बात सबको समझ में आया? तो और एक बार फिर से, इसकी राहुल सब्जेक्ट हुआ इज, ओके, राहुल हमारे सब्जेक्ट हुआ, राइट, सब्जेक्ट वर्ब से इज हमारे हेल्पिंग वर्ब हुआ, राइट, हेल्पिंग वर्ब हुआ, और ये हमारे मेन वर्ब हुआ। ओके, ये हम इसको बोला जाता है मेन वर्ब। तो ऑलवेज जब यहाँ पे राहुल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, उसके जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में हमें क्या ऐड करना पड़ता है, आईएनजी। ओके, आईएनजी, उसको क्या ऐड करना पड़ता है, आईएनजी ऐड करके हमें क्या करना पड़ता है, आईएनजी प्ले के साथ ही यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे अब हमने पढ़ा था सिंपली जो सेंटेंस करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। एम आर जो है इसका यूज क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हम क्या लगाएंगे इससे पहले, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ओके, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या करेंगे, मेन वर्ब को यूज करेंगे। ओके, मेन वर्ब को यूज करेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट हुआ हमारे राहुल। ओके, फिर से लिखते हैं, सब्जेक्ट हुआ हमारे राहुल। ओके, सब्जेक्ट हुआ हमारे, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लेंगे, जैसे कि ये अकेला है तो इज लेंगे। ओके, एंड जो मेन वर्ब जैसे क्या करेंगे, प्ले। अब प्ले के साथ हम क्या करेंगे, मेन वर्ब के साथ क्या जुड़ाएंगे, हम मेन वर्ब के साथ हम क्या जुड़ाएंगे, मेन वर्ब के साथ हम जुड़ाएंगे आईएनजी। अंडरस्टैंड? प्ले के साथ हम मेन वर्ब आया, उसके साथ क्या करेंगे, आईएनजी जुड़ाएंगे। अंडरस्टैंड? इस तरह से हमारे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे यदि हेल्पिंग वर्ब आया तो मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, यूज करेंगे। यदि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आया तो हमें इस मेन वर्ब में आईएनजी यूज नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? सो इसके बारे में हम डिटेल्स में और फिर कल इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इसके बारे में फिर हम कल एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्स में। सो
or if there is the word there is the word जैसे कि लास्ट में ई से खत्म होता है। मेरे क्लास में भी बोला है यदि वो ई से लास्ट में कोई भी वर्ड है तो उसको रिप्लेस करके हम क्या क्या करेंगे आई बनाएंगे। ओके जैसे कि ई से हुआ है हाइट, ये अब हाइट को प्लस आई एन जी ऐड करके हम क्या करेंगे एच आई डी, ई को रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे आई एन जी, यानी कि इसका मतलब होता है ई नहीं लिखेंगे। ओके ई नहीं लिखेंगे बट नॉर्मली जो दूसरा वर्ड है बस ये ई का बात हो रहा है, यहाँ पे किसका बात हो रहा है ई का बात हो रहा है। बट जैसे कि नॉर्मली ई नहीं है तो हम नॉर्मली क्या लिखेंगे वाई आई एन जी लिखेंगे। ओके ये लिखेंगे लास्ट वाला वर्ड लिखेंगे उसके साथ आई एन जी ऐड करेंगे। बट यहाँ पे यदि वो ई है तो हमारे मेन वर्ब में ई है तो हम उसको क्या करेंगे आई एन जी ऐड करने के लिए ई को हम नहीं लिखेंगे। ओके ई की जगह में यानी कि आई आगे आई, अंडरस्टैंड। तो ये होता है। सो आप लोग का होमवर्क रहेगा, ये बात कैसे रखना है, होमवर्क रहेगा कि ए ओके ए कंप्लीट द सेंटेंस, वेरी इजी। ओके सेंटेंस with is m ओके इस एम लगा के कंप्लीट सेंटेंस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ओके सो दिस वन विल बी योर होमवर्क फ्रॉम पेज नंबर 54 ओके एंड कल फिर से मैं इसके बारे में और एक बार एक्सप्लेन करूंगा। ओके सो टुडे इज दिस मच, it's all your homework and see you tomorrow. Okay, get ready for next class. Thank you. Good evening students. Now we will start our science class. Okay, this is your last class. So good afternoon Jayesh. Now it is almost 3 o'clock, so it is good evening. Okay, now yesterday हमने चैप्टर 11 वेदर के बारे में जाना। ओके अब हम रिवाइंड पे जाएंगे। ओके चैप्टर 10 वी विल लर्न अबाउट द चैप्टर 10 द स्काई। ओके हम लोग रिवीजन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ओनली वन चैप्टर इज लेफ्ट, सिर्फ एक चैप्टर लेफ्ट है, वो हम क्लास में करेंगे। अभी वी हैव टू रिवाइज द चैप्टर। ठीक है, good afternoon Angel, this is the last class Jayesh. Okay now in sky, okay in chapter 10 the sky we will learn about it. Okay now what is sky है ना, sky में क्या क्या होता है we have already learned, now we will revise those chapters. ठीक है, now in sky, okay what is sky, sky क्या है, it is the okay wide space above the earth। हमारे अर्थ के ऊपर जो हम ब्लू कलर का देख रहे हैं इज स्काई है ना। स्काई में क्या क्या है, सन मून स्टार्स है ना, सो दिस ऑल आर इन द स्काई। ओके एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई, दिस कलर ऑफ द स्काई इज blue and it keeps changing. Okay if the weather is gloomy, अगर बारिश होने वाला है तो it starts to get dark है ना, तो it keeps changing, sometimes blue sometimes it get dark. Okay it keeps changing the color है ना। तो in okay
In day the sky is blue, है ना? In the evenings it somehow looks like orange. क्यों orange दिखता है? Because the sun is setting, है ना? At night the sky looks dark. Okay? Now, first thing we see in the sky is we learn about the sun. Okay? Sun. Now, what is the sun? Sun is the huge ball of fire. Sun is a huge ball of fire. And sun is a star. वो क्या है? It is a star. Okay? Like other star, this sun is very big. बड़ा है ना? It is a huge, मतलब बड़ा, it is a big ball of fire. है ना? So the brightest thing we see in the sky, है ना? सबसे उजाला. Okay? The sun. The sun is a huge ball of fire. It is a star. And what does it do? It gives us light and heat. Okay? It gives us light and heat. Heat and light देता है जो हमारे लिए बहुत important है ना. Without sun we cannot survive. ये जो light and heat के बिना हम कोई सा भी living things, okay? Any living things on earth will not survive. अगर sun नहीं होगा तो will not be able to live. Okay? Now let's see how the sun looks. Okay. Now okay, see, now this is how the real sun looks like. Okay, this is the huge ball of fire. Sun is a star भी है और it is ball. It looks like a ball और ये सब क्या है? Heat है. Okay, it is a ball of fire. ये आपका बोला है. Okay, it is a huge ball of fire. So in real, okay, in drawing we make cute yellow one, but in real में it looks like this. Okay, understood? Now, because of the sun, okay, what does the sun do? Sun is a huge ball of fire, है ना? It gives us light and heat देता है ना? It is very far away from us. That's why it looks quite the small, because it is far away from us. वो दूर है हमसे, है ना? But in real में it is very big. It is bigger than the earth. हमारे planet earth से भी बड़ा है sun. Okay? तो क्या होता है? It gives us light and heat, है ना? Okay, and because of this, अब इससे क्या help होता है? Okay, what does it do? Now, okay, because of sun's heat and light, okay, because of sun का heat और light की वजह से क्या होता है? Number one is it helps the plant grow, है ना? Plant grow and helps to make food. Okay? हमें तो हीट एंड लाइट देता भी है, प्लांट्स को क्या करता है? बढ़ने, ग्रोथ में हेल्प करता है एंड ऑल्सो टू मेक फूड. ओके, विदाउट द सनलाइट द प्लांट कैन नॉट मेक द फूड. ओके, और क्या होता है? वी कैन सी थिंग्स बिकॉज ऑफ द लाइट, है ना? बिकॉज ऑफ द लाइट वी कैन सी थिंग्स because of sun's light. Okay, sun की light की वजह से we can see many things. Okay, okay, now because of sun's light it helps the plant grow, it helps to plant to make food,
Okay, and we can see things. It keeps us warm, है ना? Next is it keeps us warm. हमें गर्म रखना है, स्पेशली इन विंटर सीजन में अगर थोड़ा सा भी धूप निकलता है, वी गो आउटसाइड, है ना, क्योंकि हमें ठंडा लग रहा होता है. ओके, नाउ बट चिल्ड्रन एक ही ध्यान रखना है कि डायरेक्टली सन की तरफ नहीं देखना है. उससे क्या होता है, हमारे आँख में इट विल हर्ट आवर आइज. ओके, हमारे आँख को बाद में प्रॉब्लम हो सकता है. हम लोग डायरेक्टली नहीं देखेंगे. ओके, so the sun, which is the brightest thing in the sky, it is a, what is that? It is a huge ball of fire. It gives us heat and light, and it helps the plants grow. It helps the plants to make food, and we can see things because of the sun's light. If there was no sun, हम लोग अंधेरे में रहते. If there is no sun, है ना, so the sun is very very important. It keeps us warm, है ना. Now see, because of sun की वजह से हमको मॉर्निंग, इवनिंग, है ना, आफ्टरनून वो सब देखते हैं. मॉर्निंग में क्या है, बिकॉज ऑफ द sun rises in the morning, then it moves across the sky. The sun rises in the morning, na? The sun rises in the morning. Okay? The sun rises in the morning, है ना? We call it, क्या बोलते हैं हम? Sunrise को क्या बोलते हैं? It's called sunrise, है ना? जब सुबह सूरज निकलता है तो उस समय को हम क्या बोलते हैं? उस समय को हम क्या बोलते हैं? Sunrise. Okay? Okay. Now after that क्या होता है? सनराइज हो गया, उसके बाद धूप सीधा हमारे सीधा टॉप में निकलता है ना. दैट इज ऑन आफ्टरनून. व्हाट इज वी कॉल, उसको क्या बोलते हैं? आफ्टरनून. आफ्टरनून मींस वेयर एट नून, the sun is high on, sun is right on top. Right on top. It is called, क्या बोलते हैं उसको? आफ्टरनून. आफ्टरनून यानी दोपहर, है ना. ओके, अंडरस्टूड. एट नून, ओके, द सन इज राइट ऑन द टॉप. ओके, मॉर्निंग हो गया. जब 12 बजने के बाद, ओके, सूरज सीधा सबसे ऊपर होता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? आफ्टरनून. आफ्टरनून मीन्स दोपहर. Okay, now after that what comes? Evening. Okay, अब afternoon भी हो गया. Now what comes? Evening. Evening में क्या होता है? The sun sets, है ना. The sun sets in the evening, है ना. In the evening. Sun sets का मतलब क्या है? When the sun goes down, मतलब दिन खत्म हो चुका है. The sun goes down, it is called evening. Okay? Okay, now this is called, sorry, the sun goes down, it is called sunset. Okay, the sun sets in the evening. Okay, the evening turns into night. When the sun goes down, it is called sunset. Okay, जब सूरज कंप्लीटली डूब चुका है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सनसेट बोलते हैं. ओके, जब सूरज कंप्लीटली डूब चुका है. ओके, जब 1 2 3 3 बजता है, 3 बजने के बाद इवनिंग होता है. ओके, 3 बजने के बाद इवनिंग होता है. फिर अभी 4 5 6 बजे जब सूरज ढल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? लोग सनसेट बोलते हैं. ठीक है, अंडरस्टूड. ओके, in the, you can see in the
पिक्चर ऑल्सो, बुक के पिक्चर में देखो द सन राइज इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, सूरज जब निकलता रहता है, सनराइज होने लगता है, तो कई सारे लोग है ना जॉगिंग पे जाते हैं, अर्ली राइज में जॉगिंग में जाते हैं ना, मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के लिए निकलते हैं, है ना। एंड इन समर सीजन जब धूप सबसे टॉप में होता है, तब बहुत धूप तेज होता है, गर्मी होता है, तो पीपल मूव विद द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लेके चलते हैं, है ना। एंड इवनिंग में जब शाम होने लगता है, तो व्हेन यू चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, है ना, धीरे धीरे सनसेट होने लगता है, तो सनसेट के टाइम सन जब नीचे ओके डूबने लगता है, तब उसको बोलते हैं सनसेट। सनसेट मीन्स द सन इज गोइंग डाउन, ओके। नाउ द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द मून, ओके, वी विल सी द इमेज ऑफ द मून। Okay, now see, this is the real picture of the moon. Okay, तो real में moon ऐसा दिखता है. Okay, from here we see beautiful white color का ball जैसे दिखता है, but you see the खड्डास, okay, खड्डा वगैरह होता है, see दाग जैसे, okay, so this is the real picture. ये सैटेलाइट से पिक्चर क्लिक करके रियल में ऐसा दिखता है. तो ये moon, what does the moon do? It moves around the earth के पीछे पीछे घूमता है. It is the brightest thing in the sky. सबसे ब्राइट चीज रात को क्या चमकता है? चांद चमकता है ना? Okay, now it is made up of rocks and sand, है ना? ये सब जो white color का है, it is rocks and sand. Okay, understood? And इसका खुद का लाइट नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका कोई लाइट नहीं होता है. इसका लाइट कहाँ से आ रहा है? सन की वजह से. सन का रेज जब यहाँ पे गिरता है, तब ये चमकता है. ओके, नाउ सी, स्काई में हमें सब होता है, स्टार्स भी होते हैं, मून भी होते हैं, दिन में भी होते हैं, लेकिन क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि सन का लाइट इतना ब्राइट होता है, इतना तेज होता है कि हमें मून और स्टार्स दिखाई नहीं देते. ओके, सबसे ब्राइटेस्ट, तो सबसे टॉप पे क्या आता है? सन आता है, उसी का लाइट. ओके, उसी का लाइट दिखाई देता है दिन में, क्योंकि दिन में भी क्योंकि स्काई सेम है, रात को स्टार्स दिखने लगते हैं, मून दिखने लगते हैं, क्योंकि सन नहीं है वहाँ पर. अगर सन होता तो मून और स्टार्स हमें नहीं दिखाई देते, है ना. सो व्हाट हैपेंस कि सन का लाइट जो होता है मून पे गिरता है, दैट्स व्हाई इट हैज द मून रात को चमकता है, बट इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन. उसका खुद का कोई लाइट नहीं है. ओके, now moon, है ना. Okay, moon. What is moon? It is the brightest thing in the night sky. It is the brightest thing in night sky. Okay, brightest thing in the night sky. It is made up of rocks and sand. It is made of rocks and sand. And moon is made of rocks and sand. Okay, and दूसरा क्या है? It has no light of its own, है ना. It has no light of its own. It shines when the sunlight falls on it. Okay, वो तभी चमकता है when the sunlight falls on it. Okay, understood? Okay, it is the brightest thing in the night sky. Night sky. Okay, you have to know. In day there is the sun, and in the night it is the moon. Okay, and it is made up of
rocks and sand. It has no light of its own. It shines only when there is a sunlight falls on it. Okay. Now we will see the phases of the moon or the shapes of the moon. Okay. Now we will see the shapes या फिर phases of the moon. Okay. moon के चांद की कई शेप होते हैं ना, वो हम पिक्चर में देखेंगे. Okay. Now see. Okay. ये है ना, ये है phases of the moon. Okay. See. Okay. पहला होता है full moon, है ना, उसके बाद धीरे धीरे okay अकॉर्डिंग यहाँ से टॉर्च okay शेप सी. ओके. ये सब नीचे वाला थोड़ा सिटी है. ओके. हाफ मून जब होता है ना, न्यू मून. ओके. फुल मून बोलते हैं ऐसे क्रेसेंट शेप में, है ना, थोड़ा बड़ा ऐसे ऐसे. इसको क्या बोलते हैं? इट इज द फेजेस ऑफ द मून. ओके. मून के शेप्स. ओके. पहले आधा ऐसे दिखता है क्रेसेंट शेप का, है ना, फिर थोड़ा सा बड़ा आने लगता है, फिर थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा. इसका मतलब ये नहीं कि वो कंप्लीटली कट चुका है. ओके. वो सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ शैडो की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जितने में लाइट पड़ रहा है उतना दिखता है. फुल मून है ना, फिर ऐसे होने लगता है. न्यू मून मतलब कंप्लीटली मून नहीं है. ओके. धीरे 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 ऐसे करके ये सब शेप्स टाइम टू टाइम हमें मून का शेप देखने को मिलता है ना. सो दिस इज द फेजेस ऑफ द मून. ओके. नाउ वी विल सी आवर प्लैनेट अर्थ. Okay, we'll see our planet Earth. Okay, देखो see. हमारे ओके, दिस इज द सन. ओके. ये अर्थ हुआ और अर्थ के ऐसे ऐसे रोटेट करता है, ऐसे मूव करता है. ओके. ऐसे घूमता रहता है. ओके. सो दिस इज हाउ इट मूव्स, है ना, ऐसे घूम रहा है अपने ही लाइन में. बाकी प्लैनेट्स भी होते हैं, लेकिन अर्थ के पास मून है तो मून ऐसे पीछे पीछे घूमता है और अर्थ सन के पीछे घूमता है. ओके. अंडरस्टूड. ओके. लेट्स सी द इमेजेस ऑफ द अर्थ. ओके. This is how our earth looks like. ये हमारा अर्थ है ना. तो अर्थ how it's looking like a blue ball, है ना. और ये जो भी ब्लू कलर का तुम लोग देख रहे हो वो सब क्या है? वाटर है. क्या है? पानी है, ओशन है. ओके. फ्रॉम ऑल ओवर. ओके. और ये जो ग्रीन कलर का, जो ब्राउन कलर का जो एरिया देख रहे हो वो लैंड है, वो जमीन है. ओके. वहाँ पे कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट्स हैं. ओके. वो सब है. और जो ये व्हाइट कलर का है, दिस आर क्लाउड्स. ओके. एंड दिस ऑल ब्लू कलर, दिस सब जो ब्लू कलर मोस्टली हमारा अर्थ क्या है? पानी से भरा है. दिस ऑल ब्लू कलर इज द वाटर. ओके. अंडरस्टूड. ओके. सो ये है हमारा प्लैनेट अर्थ. ओके. स्पेस से ऐसे दिखाई देता है. ओके. जो ये ग्रीन कलर का है, जो ये ब्राउन कलर का छोटा छोटा देख रहे हो ना, ये सब हिस्सा, ये सब लैंड है, जमीन है. और बाकी सब इट इज ब्लू. जो ब्लू है दैट इज वाटर. और जो क्लाउड, जो व्हाइट कलर का ऐसे घूम रहा है, दैट इज द क्लाउड्स. ओके. तो ये सब इट इज द इमेज ऑफ द ये पिक्चर ऑफ द अर्थ जो ऐसे दिखता है. इट इज द ब्लू बॉल. वी कॉल इट द ब्लू बॉल. और ये सिर्फ इट इज द ओनली प्लैनेट जिसमें क्या है? लाइफ है. मतलब लिविंग बींग, जहाँ पे एयर है. वी हैव एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक,
फूड टू ईट, हमारे पास माउंटेन्स है, रिवर्स है ना, बाकी प्लैनेट्स में नहीं होता है, अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ अर्थ में ही देयर इज अ लाइफ, है ना, बिकॉज क्या है, हमारे पास एयर है, हमारे पास वाटर है ना, वी हैव फूड टू ईट, ओके। अर्थ इज द ओनली, इट इज आवर होम प्लैनेट दैट हैज अ लाइफ ऑन इट, इसमें सिर्फ जीवन है, ओके। सो this is the image of the soul. This is how our earth looks like, okay. It is very very special, our planet earth is very very special. क्यों special है? Because it has air, it has land, it has water, it has mountains, बहुत कुछ है ना, जो बाकी planets में नहीं है. That's why our earth is very very special, okay. ओके और हमारे बुक में जो है सी हाउ डज द मून, ओके मून ये अर्थ के बारे में हो गया है ना। नाउ मून का तुम लोग एक छोटा एक्टिविटी कर सकते हो, है ना, डार्कन द रूम, पहले रूम को अंधेरा बनाओ, ओके। कीप अ बॉल ऑन द टेबल, बॉल में एक टेबल रखो और उसमें क्या लगा दो, फ्लैश लाइट लगा दो, टॉर्च लाइट या फ्लैश लाइट लगा दो। उसके बाद देखो डज द बॉल शाइन, द मून शाइन्स इन द सेम वे व्हेन द सनलाइट फॉल्स इन, वैसे ही मून ऐसे चमकता है। और मून के पीछे मून के अराउंड कौन घूम रहा है, सॉरी अर्थ के अराउंड कौन घूम रहा है, मून, ओके अंडरस्टूड, ओके। नाउ बट दिस अर्थ इज मच स्मॉलर, सन के मुकाबले सारे प्लैनेट्स छोटे, सबसे बड़ा भी सन भी है और सन से भी बड़ा कभी कभी कुछ स्टार्स भी होते हैं, okay understood. Now we'll last see the image of the stars, okay. Okay see हम लोग ऐसे दिखते हैं स्टार्स, ओके फ्रॉम द नाइट स्काई, हमें ऐसे दिखाई देता है नाइट स्काई, है ना, स्टार्स कंप्लीटली चमकता हुआ, इट लुक्स ब्यूटीफुल, है ना, स्टार्स ऐसे दिखते हैं। बट व्हाट इज दिस, इट दे आर आल्सो एक्चुअली अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर, वो भी सन की तरह, वो सन की तरह ही अपना खुद का लाइट है, दे शाइन वेरी ब्राइटली, ओके, एंड दे आर आल्सो द ह्यूज balls of fire like the sun, they have their own light, sometimes some stars, कुछ स्टार्स तो सन से भी बड़ा होता है, ओके, इन सोलर सिस्टम में उससे भी बड़ा, सन से भी बड़ा कई स्टार्स भी होते हैं, बट मोस्टली सन स्टार्स ऐसे दिखते हैं, हमें ऐसे छोटे छोटे टाइनी डॉट्स की तरह दिखते हैं, है ना, बट क्यों ऐसे टाइनी डॉट्स दिखते हैं, बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, हमसे बहुत दूर है। सन हम छोटा सा बॉल जैसा दिखता है, मून छोटा दिखता है, क्यों दिखता है, क्योंकि हम अर्थ से बहुत दूर है, उसकी वजह से। अगर थोड़ा नहीं पूरा नजदीक होता इट विल लुक वेरी बिग, है ना, तो दूर है इसीलिए छोटा दिखता है, ओके। तो वैसे ही स्टार्स आल्सो दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, ओके, तो उसकी वजह से वो बहुत छोटा छोटा दिखता है, ओके। तो ये कभी कभी हमें ऐसे पूरा स्टार्स देखने को मिलता है ना, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन द नाइट स्काई, ओके। तो ये स्टार्स क्या है, वो दिन में भी होते हैं, ओके, ये दिन में भी होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते बिकॉज ऑफ द सन्स ब्राइट लाइट, ओके। सन का लाइट इतना तेज होता है, इतना ब्राइट होता है, इतना उजाला कर देता है कि स्टार के लाइट को भी धीमा कर देता है, कि हमें स्टार्स दिखाई नहीं देते, ओके, बट एक्चुअली वो प्रेजेंट होते हैं, ओके, वहीं पे होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि सन का लाइट बहुत ब्राइट होता है, ओके, इतना उजाला कर देता है कि स्टार्स मून्स हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, ओके। बट नाइट स्काई में, रात में जब सन ढल जाता है तब हमें क्या दिखाई देता है, स्टार्स, मून, ओके अंडरस्टूड। सो दिस इज द इमेज ऑफ द स्टार्स, है ना, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ओके अंडरस्टूड। तो हमने स्टार के बारे में जाना, मून के बारे में जाना, सन के बारे में जाना, ओके। सो यू हैव टू लर्न थ्रू इट, रिवाइज करो, है ना, इट इज वेरी वेरी इजी, इट इज नॉट दैट हार्ड, ओके। तो स्टार्स कैसे दिखते हैं, व्हाट आर स्टार्स, दे आर ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर एंड सन इज आल्सो अ स्टार, वी सॉ आवर प्लैनेट अर्थ, है ना, इट लुक्स लाइक द ब्लू बॉल, है ना, वी लर्न अबाउट द मून,
मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, उसका खुद का लाइट नहीं है. ओके, सो यू ऑल जस्ट रिवाइज थ्रू द चैप्टर्स. ओके, कोई भी एक्सरसाइज इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है. ओके, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम जस्ट टेक्स्ट मी. ओके, और जो चैप्टर्स मैंने कंप्लीट किया है उसका क्वेश्चन आंसर व्हेन आवर क्लासेस विल बी रिज्यूम, ऑफलाइन क्लासेस जब स्टार्ट होगा, स्कूल स्टार्ट होगा, तब मैं आपको लिखाऊंगा. ओके, बट फॉर नाउ जितना मैं रिवीजन करा रहा हूँ चैप्टर्स का, उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, रिवीजन करना है. ओके ओके चिल्ड्रन, दिस मच फॉर टुडे. आई होप यू ऑल गेट इट, है ना. स्टार्स अच्छे से समझ में आएगा, मून का फेजेस अच्छे से आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना. अर्थ को अच्छे से देख लिया होगा. ओके, सो रियल में वो ऐसा दिखता है. अंडरस्टूड? सो यू जस्ट गो थ्रू दैट. ओके, अंडरस्टूड. उसको अच्छे से समझो, यू विल और अच्छे क्लियरली तुम लोग समझ पाओगे. ओके, सो दिस मच फॉर टुडे. आई विल मीट यू टुमारो एंड keep revising the chapter. Okay, thank you guys.